I'm the master, you are the correct. No. I have shared my WhatsApp number in the first class. Drop me a message. Urgency है तो phone करो, urgency नहीं है तो drop me a message. CRSS course registration. Next. यस सर। सर ये डाउट था कि डिस्ट्रेस मैसेज और डिस्ट्रेस रिले में डिफरेंस क्या होता है सर? GMDSS किया अभी? नहीं सर, किया नहीं मैंने। इसलिए ना. That is the difference, beta. ओके सर। Certain things. I will tell you very short. Distress message is the distress message what you are sending on board. Mayday, mayday, mayday. यस सर। है ना, वो आपका distress message है. यस Distress relay is something which you are sending for any other ship. You saw a vessel on fire 2 miles off your bow. You don't know whether that vessel has sent any distress or not. So you are relaying distress for that. Relay means किसी और के लिए भेजना. अच्छे सर। ओके सर। That is distress relay. यस। और बोल चेतन. यस सर, यही डाउट सर। थैंक यू सर। ठीक. Okay, sir. In the last class, we were discussing about fire. Continuing that, in continuation with that, previously we did fire in accommodation and engine room. Now we have cargo, fire in our cargo hold. What all you will do once you have cargo, fire in your cargo hold. This is specifically cargo hold with fire, sir. This is not your fire in cargo tank. What you will do by cargo hold, I mean either it's a bulk carrier, a ro-ro ship, or a container carrier, sir. So please tell me, sir, what all actions we will take once fire in a cargo hold is detected? In port or at anchorage, sir. These are the topics for the day, sir. Please tell me, sir. Actions. Sir, first mandatory fire alarm. अगर एक इतनी बड़ी स्पेस में हुआ है, so don't you think automatic fire alarm will come, sir? Yes, sir. ना? सर पर अगर सर सपोज कंटेनर वेसल है एंड देन तो सर कार्गो होल्ड तो ओपन है, तो सर चांसेस आर देयर कि सर स्मोक डिटेक्टर्स एंड वो उतने इफेक्टिवली काम ना करे, क्योंकि मे बी सर स्मोक क्यों नहीं करेगा? स्मोक डिटेक्टर का बेटा काम ही वही है सर. अ स्मोक डिटेक्टर इन अ कंटेनर शिप इज नॉट वाटर टाइट, बट उसके ऊपर जो कार्गो होल्ड के ऊपर जो कवर लगा हुआ ना, दैट इज वेदर टाइट. करेक्ट? यस सर. करेक्ट सर. सो द स्मोक डिटेक्टर, वही मैं कह रहा हूँ ना. लेट अस नॉट अज्यूम द थिंग्स. अ शिप हैज बीन मेड, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द क्लास, and it has been made in such a way so as to keep in mind the safety of the vessel and the safety of the people working on it. So these fire detectors, the smoke detectors, the automatic nozzles, इनकी जो स्टडी है ना सर, अभी आप, आई डोंट नो, आपको अभी नहीं आएगा यार. अभी यू विल गेट इट इन, आई डोंट थिंक सो इट इज इन योर सेकंड मिड सिलेबस. फेज 2 में तो है. स्मोक डिटेक्टर की कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, हीट डिटेक्टर की कितनी स्पेसिंग, कितनी हाइट, ये सब डिटेल्स हैं. So these are all class rules which determine what type of vessel you are on, what should be the spacing. So it doesn't make a difference. और उनको इसीलिए दिया जाता है ऐसी spaces में, because if they are unmanned spaces, nobody is going to take rounds there. You will not be able to detect any fire. इतना बड़ा कार्गो होल्ड ऐसे कंटेनर का कहाँ देखोगे, कहाँ आग लगी है? So you have to go by the automatic fire alarm system. So if you have seen the fire, then raise alarm, or in case of automatic alarm, verify location of fire. Many a times there are false fire alarms, sir. Many a times, not once, not twice, many a times you will get a fire alarm has come which was false. So if a fire alarm has come, please verify whether, how you will verify? You will actually go there to see whether fire is there or not. No sir. No sir. On bridge we have the fire detection. अब उसी में तो आया. Now that is what I want to verify ना, that whether that fire is genuine or not. भाई स्मोक्स देखेंगे, स्मोक्स आ रहे हो दिख जाएगा सर. डेक पे फायर है, कार्गो होल्ड में तो स्मोक नहीं निकलेगा आपका, एयर पाइप से स्मोक निकलेगा सर. देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर. आग होगी तभी स्मोक आएगा. यू वेरीफाई दैट. ओके. हाँ जी, 2 नंबर में से अलार्म आया सर, 2 मिनट के बाद स्मोक भी आ गया, या फॉक्सल में से आया, फॉक्सल में से स्मोक भी आ गया. ठीक है.
दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई. किसी को देखने के लिए नहीं भेजना सर. मस्क होना में यही हुआ था सर, कैडेट्स को भेज दिया सर देखने के लिए, इसीलिए बेचारों की जान गई सर. ठीक है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. चलो ओके सर, नाउ इट हैज बीन determined that fire is there in the cargo hold number 2. What all actions you will take, sir? सर वेंटिलेशन क्लोज करके सर. Close ventilation, very important, sir. In case of any fire in such places, you have to first close ventilation. That ventilation is sir. Exactly sir, exactly correct, because smothering automatically हो जाएगी सर. अगर हवा नहीं मिलेगी तो फायर थोड़ी देर बाद अपने आप ही बुझ जाएगी. Very nice sir. What else sir? सर स्टॉप कार्गो वर्क. You are okay. Stop cargo. Okay, if you are stop cargo. Inform chief. And inform harbor master also and chief mate. सीधा हार्बर मास्टर को इन्फॉर्म करोगे तुम एंड चीफ मेट. अबे शिप पे तो अलार्म हो गया, तो कैप्टन और वो तो मस्टर नहीं हो. यस सर. अरे यार ऐसी बात नहीं करने का, मतलब वो तेली वाली बात नहीं करने का कि वो साले सो ही रहे हैं. मेरे जहाज पे आग लगी, साला गैस इंजीनियर ही मिसिंग था, बस बाकी सारे थे, गैस इंजीनियर मिसिंग. बताओ. ओके, इन्फॉर्म पोर्ट कंट्रोल जो भी था. नाउ लेट पोर्ट इन्फॉर्म हार्बर मास्टर, लेट पोर्ट इन्फॉर्म देयर फायर फाइटिंग स्क्वाड. You have informed port control the way you were interacting with port control. आपके पास कोई वो VHF channel था or you had terminals walkie talkie with you, so you informed them. Okay, very nice sir. Then what else you will? But in case the Sir, cargo hold consists of, in case the cargo hold Those booby consists of, One by one. Abhijit पहले को बोल. Abhijit. in case the cargo hold consists of dangerous goods, then we could refer to the IMDG code for emergency schedule. अभिजीत. अब Yes. देख मैंने ना फिर से पिटारा खोल दिया. मेरा एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मत निकाल. What you said is correct, but आपने मेरे को 3 क्वेश्चन दे दिए. I will ask you what is a dangerous cargo. I will ask you what is IMDG. I will ask you what is EMS. फंस गया तू, अब देख ले. नहीं अब sir, dangerous cargo is something which is hazardous to carry अबे on. तेरे को आता है ना, मेरी तू बात नहीं समझ रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, तू पढ़ के आया है, बट कहते हैं ना अगर दिन अच्छा ना हो ना तो आदमी हाथी पे बैठा हो फिर भी कुत्ता काट जाता है. ठीक है ना. तूने सपोज कर डेंजरस कार्गो का आंसर दिया, मैंने उसमें से कोई आंसर निकाल क्वेश्चन निकाल लिया, तो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बोलने, जैसे स्टॉप वेंटिलेशन, स्टॉप कार्गो वर्क, इन्फॉर्म पोर्ट. ज्यादा सर्वेयर को वो नहीं देने आंसर जिसमें वो क्वेश्चन निकाल सके. तो आपका आंसर ये सकता है सर, वी विल चेक द स्टोरेज प्लान to see if to see the nature of cargo. तो ठीक बात बोली आपने, that I will check whether there is any DG cargo in that hold or not, or if it was a normal cargo. So that will decide. अगर सर्वेयर बोलेगा अच्छा जी क्यों चेक करोगे सर, that will determine my way of fighting that fire. ठीक है, तो कहेगा हाँ यार लड़के को पता है. अगर पूछेगा what all you will prefer, then you can say sir I will as per IMDG code I have EMS schedules, so I will do that. ठीक है. What you were कंटेनर वाले ने यही पता है. हाँ वही मैं समझ गया था, कंटेनर वाला ही है बाबू, समझ गया था मैं. हाँ सर, एक और बच्चा कुछ बोल रहा था जब अभिजीत वाज टेलिंग. प्लीज नाउ गो अहेड सर. Sir, we'll inform engine room and prepare fire pump. अबे जो रेज अलार्म की है, जो कैप्टन को पता चल गया, चीओ को पता चल गया, तो तेलियो को नहीं पता चला होगा क्या? तेलियो को नहीं पता चला होगा सर क्या पता वो लोग कह रहे हैं, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं. हाँ कि आग लग गई है. सही बात है, वो यही कहेंगे अरे हम तो यार सोच रहे थे किनारे जाना है, शोरलीव जाने के लिए रात में जाए. सही बात है. और ये बचकानी चीजें नहीं करनी. नाउ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस नो. तेलियो को इन्फॉर्म करना, फिर कहोगे वी विल इन्फॉर्म इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ही हैज टू कम एंड स्टॉप द वेंटिलेशन एंड द लाइटिंग. नहीं, रेज अलार्म में सब लोग मुस्तर हो गए हैं. नाउ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन यू, यू एज ड्यूटी ऑफिसर, यू एज चीफ ऑफिसर, व्हाट यू आर डूइंग. आपने स्टोरेज प्लान चेक कर लिया, नेचर ऑफ कार्गो देख लिया. नाउ व्हाट यू विल डू सर नेक्स्ट? प्रिपेयर फायर पार्टी है. Sir, in case anyone from the port is on board, like stevedots, we will ask him to evacuate the place. Actually correct sir, actually correct. Make sure all stevedots leave the. Why that is important sir? Why that is important? So because they are not aware of the situation, like
fire on board. They are not aware of the hazards on board, so they are not aware of what all alarms are there, and they are not insured while they are working on board, sir. They are not insured. कल को उनको कुछ होता है ना सर, तो सीधा आपके ऊपर मैन स्लॉटर का चार्ज आ जाएगा. So it's better whosoever is there, once you have mustered, please designate 1 or 2 people to make sure all these stevedots leave the vessel by the time you are preparing your fire party. Very right, sir. और बताओ sir, क्या करेंगे हम? What else we will do, sir? अरे क्या हो गया फायर के केस में? ये देखो Sir, we will open all the sir hoses on deck, sir. We'll start cooling the deck. Start boundary cooling, sir. Yes, sir. The emergency fire pump running. Boundary cooling, sir. Start boundary cooling. जब तक fire party आ रही है, you start boundary cooling so that your fire will not spread. Excellent, sir. What else, sir? Sir, you are in port. Can you do something else? Can you do something else? Sir, we'll rig ISC connection and we can ask from the port, sir, help. Sir, ISC connection कब लगाते हैं सर? तो कह रहा देखो सिंपल आंसर दो मेरे को टेक्निकल. Fire fighting. फायर फाइटिंग कब फायर फाइटिंग करनी है? सर अगर हमें सर शोर से सर हमें कनेक्शन लेना हो सर. सर जब शिप ब्लैकआउट हो जाए, मतलब कैपेबल ना हो फायर पंप के लिए. बिल्कुल करेक्ट. जब शिप का फायर पंप नहीं चल रहा और शिप से कनेक्शन लेना है, शिप पे ब्लैकआउट हो गया या शिप के इंजन रूम में आग थी जहाँ पे फायर पंप था, तब मैं शोर कनेक्शन से लूंगा ना. बट अभी तो हम लोग फायर कर रहे हैं सर. बट what you have said we can include is take shore fire fighting team. So they will also assist you. चाहे वो बाहर से बाउंड्री कूलिंग करे सर, चाहे उनके फायर फाइटर जहाज पे आए सर. So please involve them because particularly sir, this is not fire out at sea. This is fire at anchorage or fire in port. Even at anchorage, if you have informed port, it may happen that they will dispatch firefighting tugs to your vessel. ठीक है, उनका कोई बंदा नहीं आएगा, लेकिन वो आपके जहाज पे जहाँ पे भी आ गए वहाँ पे किनारे से पानी डाल सकते हैं. तो you please take help from them. Okay? International shore connection तब लगाएंगे सर जब we will see that our ship's firefighting system is not coping up. So we have to rig international shore connections so that we can take water from shore. That is the point when we will rig international shore connection. Yes, bulk carrier और containers पे कहाँ होता है international shore connection? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है. Where do you keep this one? Tankers पे तो हम लोग manifold पे रखते हैं, but on bulk Yes, sir. On containers. फायर रूम में फायर कंट्रोल स्टेशन Fire control station के पास. क्योंकि हम लोगों का एक वो फायर कंट्रोल स्टेशन में भी होता है और एक उठा के मैनीफोल्ड पे लेके आते हैं. सो यू हैव ओनली वन व्हिच इज एट द फायर कंट्रोल स्टेशन. यस सर ठीक ठीक. मेरे को पता नहीं था, मेरे को याद नहीं था. ठीक है, और बोलो सर. सर अनकंट्रोलेबल फायर हुई तो फिक्स फायर फाइटिंग यूज कर लेंगे. यार वो करेंगे बाद में. इफ द फायर, अभी तक तो कंट्रोल हुई नहीं ना यार. अभी तक तो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं. हमारी फायर पार्टी गई है, बाउंड्री कूलिंग स्टार्ट कर दी है, शोर की फायर फाइटिंग टीम आ गई है. सर अगेन ध्यान रखो सर, यू आर इन पोर्ट एंड यू आर इन एंकरेज. व्हाट एल्स यू कैन डू? व्हाट एल्स यू कैन डू सर टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ? कैन यू डू समथिंग? Sir, we can go away from port, sir. We can go away from the port. अरे बाप रे, मतलब भागी जाओ पोर्ट से. नहीं सर, पर सर पोर्ट पे ज्यादा डैमेज होगा ना अगर हम पोर्ट पे हैं तो. अच्छा तो भैया मेरी लेकिन सबसे बचने के चांस भी पोर्ट पे ही है. बाहर कैसे जाऊं मैं? मेन इंजन कैसे चलाऊं? मतलब I have to concentrate myself on fighting the fire or I have to concentrate on navigating the ship? What is the first priority here? For me, Fighting the fire. stay in the port and fight the fire. Sir, can you send all additional people like supernumeraries and cadets which are not required to shore? Can you ask them to do it or not? Yes sir. Yes sir, please ask all the people like supernumeraries, etc. who are not required board to go on jetty or fire fighting tugs. Them away from your vessel, sir. Not that
They cannot be of any help. But we have to save their lives here. We have to save their lives. That's sir. I will do that. If I don't need anybody, I'll tell them, okay, you people, please stand down. Don't stay on board. You stand down. So if you will stand down, you will stay more safe. That is what I will do, sir. Okay. Please look into that. इसलिए specifically कह रहा हूँ, sir. Fire is in cargo hold in port. Okay. Now you can write, sir. After assessment from the fire fighting team master along with the port authorities can decide to use fixed fire fighting system. अब देखो सर, इसमें मैंने अपनी फायर फाइटिंग टीम का भी ले लिया कि सर फायर बहुत बड़ी है सर, कंट्रोल में नहीं आ रही. वी ट्राइड बट वी कुड नॉट गो. ओके. Now you are in port or you are at anchorage, you must be having somebody from the shore who will be guiding you or who will be assisting you. You take his opinion also. That okay, my team has come back. They have told me that fire is big, we cannot control it. So I will evacuate everybody to the safety and then I will release CO2. You can do that, sir. But सर मास्टर अलोन डिसीजन नहीं ले सकता सर फिक्स फायर फाइट. but मैं पोर्ट में खड़ा हूँ सर. If I am out at sea, it is my decision alone. But right now I am in port, sir. बट सर पोर्ट में जब अगर फिक्स फायर फाइटिंग यूज करेंगे तो हम बाहर कुछ थोड़ी ना डिस्चार्ज करें, हम अपने होल्ड की फायर कंट्रोल कर रहे हैं. डिस्चार्ज कर रहा है बाबू. अगर हो सकता है उसके पास कोई बेटर आइडिया होगा. डोंट यू थिंक द शोर फायर फाइटिंग गाय कैन हैव अ बेटर आइडिया? उससे कंसल्ट ही तो किया है. अलोंग विद, मैंने कहा ना, अलोंग विद. डिसीजन फाइनल मेरा है. हो सकता है वो मेरे को कोई बढ़िया आइडिया दे दे कि कैप्टन रुक जाओ, मेरे पास हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर से पानी गिरा देगा. अब बताओ, रुक जाओ आप. बिफोर यू रिलीज दिस, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. वी हैव अवर हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय, फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर, and it will put water on top of the fire because your people cannot reach, but my chopper can reach on top of the fire. Yes or no, sir? Yes sir. So you have to make sure that you use all possible resources. Sir, एक बार fixed fire fighter system release हो गया ना, उसके बाद कुछ है नहीं सर. You won't be able to release CO2 again, ना. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना सर. वो एक ही बार है, वन शॉट है आपके पास. तो इसलिए अगर मेरे पास कोई शोर वाला बंदा है, मैंने उसको अगर कंसल्ट किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग सर. जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है सर. इसलिए एक बार उसको कंसल्ट करने में क्या जाता है कि भाई माय मैन हैव कम आउट, दे सेड फायर इज ह्यूज, इट इज वेरी हॉट ओवर देयर एंड वेरी अनसेफ टू अप्रोच. डू यू हैव एनी अदर मींस और कैन यू प्रोवाइड मी एनी अदर सपोर्ट? इफ दे से नो कैप्टन, इट इज योर शिप, you decide. Okay, everybody clear, I am releasing. Let's take head count and let's use fixed firefighting system. But in case he says, okay captain, I have one more thing, or can we try this? Or if your people are not properly dressed, probably my men, they are a little bit more worse with it. Let my team go there once. If you want, you just give me support. Let my team take charge. Why not? Yeah, let them. Idea is to keep the ego aside and fight the fire. ऐसे केस में कीप योर ईगो असाइड एंड फाइट द फायर सर. जहाज बचाना है और लोगों की जान बचानी है. इससे कोई मतलब नहीं है कि आग कैसे बुझे. अब लग गई है, वो बाद में डिसाइड करेंगे किसकी गलती थी, किसने क्या काम किया, वो बाद में डिसाइड करेंगे. और बताओ सर, एनीथिंग एल्स यू कैन डू इन पोर्ट? यू हैव यूज्ड योर फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नाउ व्हाट? And fire is not extinguished. Chalo, let me continue that same scenario. You use the fixed firefighting system. Fire is still extinguishing or still burning. Now what you will do? अगर तो खत्म हो जाती तब तो कहानी खत्म हो गई. But now fire has not yet gone out. Fire is still burning. What you will do, sir? What you will do? सर अगर फिक्स फायर फाइटिंग से नहीं हुई और शोर वालों से भी नहीं हुई तो फिर लास्ट में तो अबंडन ही बचेगा शायद. Evacuate the vessel. Sir, always we keep shoreside gangway and seaside gangway always ready. Always ready. ये इसीलिए होता है सर. Even at anchorage, we do keep one side of gangway ready all the time. Always. Sir, consider evacuating the vessel in case fixed firefighting system has failed. Do not be
having that false pride, अरे मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, consider to evacuate the vessel. And fighting system was rendered useless. Fixed firefighting system से भी नहीं हुआ. I will consider abandoning the vessel. I will consider. I am not living in false pride कि मैं सब कुछ कर लूंगा. नहीं हुआ यार. I have tried it. My men went there. Shore people went there. Fixed firefighting systems. Now my resources are depleted. My men are tired. I don't want to risk. Holland Machinery Insurance मेरे को ship की insurance दे देगी. But I don't want to risk life of my seamen. Simple, as simple as that. I will do that. Okay, and my life is also important as a master. My family also needs me, so I am not that type of master who will go down with the vessel. Fuck man. वो पहले के जो टाइम में होता था, I will not die. I will also evacuate. But first, I will make sure all my men are safe. Then I will evacuate. I will be the last person to leave the vessel. But this is what I will do. So you have evacuated the vessel, and the fire is still burning. What actions you think the shore can take now? What actions you think shore can take? Nobody is on board, sir. Nobody is on board. What They action? can tow the vessel, sir. They will tow the vessel away. बिल्कुल सही बात बोली सर. The shore will decide to tow the vessel. Exactly correct. If the fire was still burning, can you do this at Anchorage? Can you do this at Anchorage? एंकर डाला हुआ सर. एंकर कैसे उठाएंगे? चलो रस्सियां तो काट दी और टग्स ले गए सर. But same question at Anchorage. You have evacuated. You are in the life boats or you are in the other boats provided by the shore, and vessel is still on fire. Then what will port do, sir? सर साइड्स के वेसल चले जाएंगे सर. मेरा वेसल वहीं रहेगा सर. Okay. If at Anchorage, ask other vessels in the vicinity to leave the Anchorage. सर बिटर एंड से भी तो निकाल सकते हैं ना एंकर को. बिटर एंड पे कौन जाएगा भैया? नंबर 2 होल्ड में आग लगी हुई है. नंबर 2 उसमें आग लगी हुई है. Who will go to into the forecastle, sir? I will not go, sir. I will not go, sir. I will not send any one of my crew member. आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है यार. देखो आपने पहले एक टीम भेजी जो कि कहीं नहीं हो सकता सर. शोर ने एक टीम भेजी. शोर वॉज कंटिन्यूइंग बाउंड्री कूलिंग. आपके लोग भी बाउंड्री कूलिंग कर रहे थे. देन यू यूज द फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम. बट स्टिल you know fire is burning. It means fire has actually grown big here. And number 2 is almost at the forecastle. How you want to send somebody on the forecastle to release the bitter ends? आप किसी को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना चाहते हो आगे पे forecastle deck पे? नहीं sir. The best step, I will tell you sir, what in fact ports have done sir. They have actually sunk the vessel sir. They have sunk the vessel. If fire was huge, पूरे जहाज पे आग लग गई है and it is becoming uncontrollable, they have actually sunk the vessels as well. कि थोड़ा पानी में जाएगा अपने अभी आग बुझ जाएगी. They have actually done that. There have been cases where ports have decided to sink the vessel to extinguish the fire. It has happened, sir. But this was the right approach. That rather than taking that drastic step, कि मेरे को bitter end से जाके release करना पड़े, and then vessel will be towed away out at sea. It is better that the nearby vessels say within at least 2 miles vicinity, ask them to heave anchor and proceed back to sea. That will be much more easier and much more safer. What else you can do, sir, if your ship is in fire in port or at anchorage, sir? Anything else which we are missing, sir? Anything else which is missing?
Sir, anyone can think of anything which is missing, sir. That bitter end सर is a... रिपोर्ट टू कंपनी सर अबे जब यहाँ पे शुरू में तो वो तो सबको चली गई यार. इन्फॉर्म पोर्ट कंट्रोल, चल यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी. इन्फॉर्म पोर्ट कंट्रोल कॉमा लोकल एजेंट्स एंड द ऑफिस, यहाँ लिख देता हूँ. वो तो बहुत पहले करना था, जब हमने सबको इन्फॉर्म किया तभी बता दिया. चलो, गुड. दिस आई हैड फॉरगॉटन. वेरी गुड. व्हाट एल्स? What else you can do, sir, in case of fire in port or at anchorage? Sir, if possible, sir, take the logbooks with you. Take the logbooks with you if you are abandoning the vessel. Yes, sir. If you are abandoning the vessel, sir, if you are abandoning the vessel, then there is responsibility of the bridge duty officer. When he is coming down, he will take the logbooks along with him. ये तो होती है, उसकी ड्यूटी है सर. And to carry out this duty, we generally, I don't know what was practice in your company. We had one special canvas bag on ship, which was quite like, thick bag. उसके अंदर logbook, आपका जो present chart है, वो आपका EPUB, आपका 160, and if anything else was required, वो आजकल वो है, GMDSL walkie-talkie है, my iridium phone. We used to take that in that one bag down, sir. In fact, what I was doing, I used to keep one additional bag ready in my office. उसके अंदर मैं crew के passport और seaman book भी लेके जाता था. This is the duty which I used to add. Yes, sir. In one of my ship, the master also used to practice this. This is very important. So एक बार आपके documents गए, you are like a refugee in the foreign land. You have no passport, you have no seaman book. Okay, it is not feasible to carry all your full certificate file, because to carry full certificate file for 25 people will be very, very difficult. But passports and seaman books, it's a small bunch and it can be easily carried, sir. So I used to give the same duty to the duty officer of the bridge who was taking the deck logbook. He was carrying this passport and seaman book also for all the crew members. I gave him that duty as well, and this is a very good practice, sir. If you have your passport and seaman book with you, a lot of problem is already solved. Certificate file for 25 crew members, it is very heavy. That is out of question. But seaman book and passport, yes, definitely. This is the duty of my bridge duty officer only, who was going down, who was taking the logbooks, EPUB, SAT, your GMDSL walkie-talkie, and my iridium radio. So उसको एक बड़ा बैग दिया हुआ था, उसी में वे सब डाल के लेके जाता था. Good, sir, but good answer. What else? What else you can do, sir? सर जितना भी पॉसिबिलिटीज होगा सर, ऑयल स्पिलेज का चांसेस सबको क्लोज करेंगे सर बिफोर सिंकिंग और इवैक्यूएटिंग सर. बेटा देखो, वो जो सिंकिंग इवैक्यूएटिंग से पहले तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना. इवैक्यूएटिंग के टाइम पे देखो क्या होता है सिनेरियो. फर्स्ट इज सेव लाइफ, सेकंड इज what comes second? First is always safety of life. After that, what is there? Environment. Safety of the sea. Environment. Last is your property है. प्रॉपर्टी हमेशा बाद में आती है. तो सर सबसे पहले लाइफ बचाओ. अगर यार आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं उस कपर लगा दूं, या मैं यार वो ऑयल को कहीं और ट्रांसफर कर दूं और फिर मैं इवैक्यूएट करूंगा, तो सर हो सकता है जब तक आप वो ट्रांसफर कर रहे थे ना ऑयल को, तो हो सकता है you will not be there to evacuate the vessel. Fire will spread so much, or probably there will be another explosion on board. So sir, I will not wait. Once my crew is off, then if shore team wants to board and they want to transfer the oil from the ship's tank into any other barge, most welcome. Do whatever you want. But I will not ask even my single crew member to stay on board for even a single minute longer. That is for sure. Shore ki teams, they have done this thing in the past, that ships have collided, ships have grounded, their power is lost. So whatever tanks were intact, उसका oil जो है उन्होंने transfer किया है. This thing has happened, but this is again a special salvors job. Special बंदे हैं इसके लिए जो ये काम करते हैं सर. उनको बुलाया जाता था. That is why I said कि why did not sink the vessel just like that. There are several people. If you decide to sink the vessel, it is a specialized job. This I will not decide, or my ship owners will not decide. It will be the job of the salvors. They will think whether they can save the vessel or whether they can't save the vessel.
If they can save the vessel, how much value they can save. If they cannot save the vessel, what will be the impact. So this is all decided at a very, very different level altogether. But nice, environment point was good that you thought about this. Very good. What else, sir? What else, sir? What else? Okay. What else, sir? I think this is good enough because all this is in addition to all these things, sir. Evacuate, inform, muster, head count, ये सब भी तो है ना सर, जनरल फायर के लिए जो पॉइंट्स थे जो हमने परसों डिस्कस किए थे, है ना? This is all in addition to all these points. These 15 points are in addition to these 16 points which are there. Okay, so I think you can write this answer. पर जब ये हमारा जो मॉड्यूल हो जाएगा करीब 2 क्लासेस और में, तो ये जितनी भी मैंने नोट्स बनाए हैं ना हम लोगों ने मिलकर, ये मैं आपको सारे भेज दूंगा बिकॉज ARI के कोई नोट्स है नहीं सर इस टॉपिक के ऊपर. तो इट इज़ बेटर जो हमने इसी, और यही एक रीज़न था कि वाई आई वॉज राइटिंग अलॉन्ग विद यू सो दैट यू गाइज डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. एंड वंस अभी इस टॉपिक में हमारे 3-4 और टॉपिक्स हैं, फ्लडिंग है, आई थिंक स्टीयरिंग फेलियर, इंजन फेलियर, तो एक बार वो सब हो जाएंगे ना तो एक पूरा सेट बना के आई विल सेंड यू अ मेल. ठीक है ना, ऐसे करेंगे सर. ठीक है जी. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर ये जो हमारा पॉइंट है कि फायर इज स्टिल बर्निंग देन पोर्ट विल डिसाइड टू कट द रोप एंड डिसाइड टू टो द वेसल, तो सर वेसल की टोइंग से पहले हम फायर वायर रिग करेंगे सर? फायर वायर तो ऑलरेडी रिग्ड ही होती है बाबू. कौन सा टाइप का जहाज पे सेल किया तुमने सर? टैंकर सर. हम तो टैंकर पे रिग नहीं करते थे फायर वायर. नहीं सर, वो मतलब पोर्ट की जो रेगुलेशन होती है उसके हिसाब से रिग करते थे, मतलब मैंडेटरी नहीं होता था. अच्छा, तुम्हारे उसमें मैंडेटरी नहीं है भाई, हमारे तो उस पर मैंडेटरी था सर. चलो खैर कोई बात नहीं सर. अगर वो नहीं भी रिग करेगा ना फायर वायर रिग, तो फिर भी टो नहीं कर सकता क्या? इफ आई डोंट रिग अ फायर वायर, बल्क कैरियर में तो फायर वायर होती नहीं है. अभी जी तेरे कंटेनर शिप पे फायर वायर ठीक है यार, मुझे पता नहीं है कंटेनर पे होती है कि नहीं होती. नहीं नहीं सर. नहीं होती ना. नहीं सर. नहीं होती सर. है ना, तो बल्क कैरियर कंटेनर को कैसे टो करेंगे? अब टैंकर को तो चलो ठीक है आपके पास फायर वायर थी, आपको टो कर दिया, बट हाउ ships will be towed which do not have a provision of fire wire? How? सर थ्रू मूविंग विंचेस. और तेरी मतलब जहाज पे किसी को आना पड़ेगा, और you will ask somebody to stay back to rig some wires or rig some arrangement. What you will do? सर हल में सर शिप साइड पे सर टग शिप साइड पे बनी रहती है सर. संकन बोलार्ड्स होते हैं सर जो आगे उनको. Yes, exactly. Sachin बड़ा सही आंसर दिया तुमने. There are always sunken bits on the ship side. अरे they will use that. अरे emergency है भाई. They will use that. They will just cut your rope. Sunken bits जो है ना वहीं से खींच के ले जाएंगी tugs. Basically the idea is not to take them fully out of the port. Idea is to move them away from the jetty जहाँ पे आग लगी हुई है. अब उस जेट्टी के आगे भी जहाज है, जेट्टी के पीछे भी जहाज है, और जेट्टी के ऊपर बंदे भी काम कर रहे हैं, जेट्टी के ऊपर ऑफिसेस भी हैं, जेट्टी के ऊपर दूसरी पाइपलाइन भी है, जेट्टी के ऊपर आपका कंटेनर शिप था, तो दूसरे नॉर्मल ट्रक्स भी खड़े हैं. सो वी वांट टू नाउ सेव द वेसल एंड द पीपल अराउंड इट. Okay, so that is what terminal will decide that okay, I will use the sunken bits to move the ship away. But yes, in case of a tanker, if the fire wire was rigged, then the life is very, very easy. Then you don't have to do anything. But Sachin ka answer bilkul sahi tha. There are sunken bits, sir. I was actually looking for that word, sunken bits, and he actually nailed it. That was really nice answer. Okay, so this is what terminal will decide what to do, how to do, what is the about it and how to get over it. सर अगर जैसे आई थिंक मेरे लास्ट वेसल बल्क कैरियर में नहीं थे संकन बिट्स, तो अगर जो मूरिंग रोप्स कट करेंगे, अगर जेटी पे थे हम, तो उन कट मूरिंग रोप्स को यूज नहीं कर सकते बार्ज वाले, मतलब नोट वगैरह. बट वो उन मूरिंग रोप्स की ना वो स्ट्रेंथ नहीं है. बट सर इन केस अगर बे बोलार्ड्स नहीं, तो वही ऑप्शन बचेगा हमारे पास शायद. वही ऑप्शन बचेगा सर. फिर तो वही ऑप्शन है, उन्हीं रोप से खींच के दूर कर देंगे जेट्टी को थोड़ा, वही करेंगे. यू आर राइट, मूरिंग रोप्स जो काटी हैं उन्हीं को यूज करेंगे. और अगर वो भी नहीं होता सर, सो मेनी अ टाइम्स दीस टग बोट्स दे हैव गॉट हाइड्रोलिक विंचेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स टाइप होती हैं,
तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़ के कोई बंदा वो जो आपके शिप पे वो है ना बुलाड उस पे डाल देगा. Yes, This yes. is what I'm saying, that those firefighting tugs, they are specialized tugs. They are not the normal tugs which are used to tow the vessel. These firefighting tugs are special tugs with special equipment and special people who are trained in all these eventualities day in and day out. ठीक है. तो भगवान ना करे कभी आपको इसकी जरूरत पड़े, बट हाँ, if you are doing, again sir, most importantly, make sure you save your own people first. Always. शिप डूबता डूब जाने दो सर, एनवायरनमेंट खराब होती है हो जाने दो, बट आपके बंदों को कुछ नहीं होना चाहिए सर, कुछ भी ना हो. All your actions should be such that people on board are not affected in any way. इसका हमेशा ध्यान रखना प्लीज. हाँ चलो सर, फिर भी किसी को कोई डाउट हो पूछो, व्हाट्सएप मारो. So what are the actions in case of flooding? Actions in case of flooding. What is flooding? In case your ship has started to flood, what actions you will take to make sure your ship and your people are safe? भाई सर रेज अलार्म करेंगे, मस्टर करेंगे. ठीक है, रेज अलार्म. मतलब रेज अलार्म के देखो यार, फ्लडिंग जब होगी तो कैसे होगी सर? कोलिजन. कोई कोलिजन हुआ है या ग्राउंडिंग हुई है तभी Grounding. होगा ना सर फ्लडिंग. तो उस केस में क्या रेज अलार्म करना है क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, उस केस में क्या रेज अलार्म करोगे? देखो यार ये सारी बातें ना, अगेन आई एम टेलिंग यू टू क्लियर योर ओरल्स और टू क्लियर योर एग्जाम्स. इट इज वेरी वेरी नाइस. आप ये बात बोल सकते हो सर, आई विल रेज अलार्म, आई विल इन्फॉर्म द पीपल, बट नॉर्मल केस में क्या करोगे सर? नॉर्मल केस में हाउ यू विल डू? प्रैक्टिकली बात करोगे कि जब ये सब कुछ हो रहा था ना सर, तब कोई आदमी चेकलिस्ट खोल के नहीं रखता है सर, तब ये जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वही काम आती है. तो इसलिए अब आप ये सोचो ना, रेज अलार्म क्या? यू हैव ऑलरेडी कोलाइडेड, यू हैव ऑलरेडी ग्राउंडेड, ड्यू टू दैट योर शिप इज टेकिंग इन वाटर, so people are already working on it. But how, as a duty officer on the bridge, you can be of help to the firefighting team on the deck, or to the emergency team which is being led either by chief engineer or by say chief officer on deck, or how you will inform me as a master when I am busy with communication with shore or with other party. अभी आप अपने आप को उस ड्यूटी ऑफिसर के रोल में रखो सर. तो अलार्म मैंने रेस किया हुआ है, मेरे बंदे ऑलरेडी फायर फाइट कर रहे हैं. व्हाट न्यू आर यू डूइंग और हाउ यू विल असिस्ट मी सर? पीपल आर ऑलरेडी फाइटिंग. सर आपको असिस्ट करेंगे आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सर. मेरे ऑर्डर, मेरा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, मैं तो खुद बहुत बिजी होऊंगा. So we can start ballasting on the opposite side of flooding, or we can start deballasting in which area there is flooding. सर देखो मैंने क्या लिखा है, attract the attention of the ship staff in case flooding starts at a new location. Sir, suppose करो you collided bow to bow and your forepeak tank was flooding. So chief officer and other people were already preparing the lineup to deballast forepeak tank. And you are monitoring from the bridge. You have the ballast control panel in front of you. You are in the middle. You are keeping the records. You are doing as what captain is saying. You are conveying chief officer's messages down to the engine room, or you are doing a lot of things on the bridge. But now you have noticed that my collision bulkhead has also been breached, and you have received a high level alarm from number 1 starboard tank also. अब बोलो सर, so don't you think sir, जो रेज अलार्म था ना सर, वो ये आ गया, that you will tell chief officer and you will tell captain, sir, there is ingress in number 1 cargo hold as well. I have just received the alarm for number 1 cargo hold.
So attract the attention of the ship staff. That can be your chief officer. That can be your captain. In case there was flooding in the engine room, suppose they were fighting fire in fighting the flooding in steering gear room, and now you've got engine room bilge level high alarm. So inform them that I have received engine room bilge high level alarm from the starboard side as well. पहले port side से आ रहा था, अभी starboard side में भी, so that they know that they need to tackle the flooding there as well. सर ये आपने कर लिया, उसके बाद क्या करोगे सर? As somebody rightly said, commence transfer of water. This can either be deballasting or इसको deballasting रखते हैं, मैं दूसरे तरीके से, or educting. Sir, many places like in engine room you don't have a ballast pump, there you have a eductor, correct? सही कह रहा हूँ सर? Or if your pipe duct is breached, पाइप डक में या डक कील जिसको कहते हो आप लोग सर, उसमें पानी आ गया तो उसमें बैलेंस पंप नहीं है सर, बट उसमें एडक्टर है सर, ठीक है? सो दिस यू कैन असिस्ट इन. वन पर्सन राइटली सेड सर, ballast the other side of the breach to keep the vessel upright. The starboard side is taking in water. You are trying to deballast one starboard, but try to take the vessel in, water in one port to keep the vessel upright. Or to keep the breach over water. Breach over water means जहाँ पे hit किया था वो point अगर पानी के नीचे है तो उसमें से flooding होगी सर. By taking the ballast on the opposite side, I am keeping that breach over the water so that more water will not come inside, sir. Sir, what else you will do, sir? सर साउंडिंग लेंगे सर इनकी, अदर टैंक्स की, बिल्जेस की और कॉफर डैम्स की कहीं और तो नहीं हो गया? Very good, sir. Very good, sir. कि अगर एक जगह आया है तो दूसरी जगह भी आ सकता है. All the watertight compartments, if they were open, sir. अगर एक जगह पे पानी आ गया है, it should not travel to the other places. What else you will do, sir, in case of flooding? So we'll check and verify the ballast pumping system, and we'll see if all the valves are shut. नहीं है, बैलेंस पंपिंग सिस्टम तो रखना है ना, यूज करना है ना. All, why should all the valves be shut? Sorry sir, they should be shut in case they should be not the transfer from one ballast tank to other. मैं समझा ही नहीं तेरी बात. कौन सा? क्योंकि ट्रांसफर ही तो करना है, ट्रांसफर ऑफ पानी तो करना है ना बाबू. नहीं सर, पर हम किसी और में अगर गलती से वेल्व खुला होगा तो उसमें भी चांसेस है ना किसी और टैंक में आ जाए सर. अच्छा, you want to maintain कि हाँ जिस टैंक, मतलब be sure of your ballast lineup. Okay. Yes sir. That what you are doing, जिसको बैलेंस करना है उसको बैलेंस करना है, जिसको डीबैलेंस करना है उसको बैलेंस करना है. ओके. What else? सर विजुअली डैमेज चेक करेंगे सर, कितना है, किस रेट से मतलब हम पानी ले, कितना फ्लडिंग हो रहा है. Try to ascertain the damage. Really calculate the damage stability. But ये बहुत important है. This is very important. That even if you are unable to pump out that water, or even if you are taking the water on the other side, will your vessel float or not? This is very, very important, sir. Based on that, you can also decide if you have to abandon the ship. सर एक बड़ी ना कॉमन चीज है जो आजकल आप भूल रहे हो, और ये बहुत पुरानी चीज है सर. In case of damage, what we do, what I as a master do, अगर आप लोगों ने मेरे ऑफिस में या ब्रिज में एक ना पोस्टर लगा होता सर, एक स्टिकर होगा या पोस्टर होगा, whom to contact.
whom to contact? एक मैं पर्टिकुलर बंदे को फोन करूंगा सर, एक किसी पर्टिकुलर बंदे, और वो ब्रिज पे भी लगा होता है, डीपीए नहीं, ब्रिज पे भी लगा होता है और मेरे ऑफिस में भी होता है. In case of collision, in case of grounding, in case my structural stability is compromised, I have to call someone. I have to call someone. I have to inform them, and they also calculate my damage stability ashore. What is this ERS? Emergency Response Service. ये क्लास की होती है सर, DNV की. आपने स्टिकर लगा हुआ देखा होगा, DNV Emergency Response Service ऐसे करके देखा हुआ कि स्टिकर लगा हुआ है. Yes, sir. ये होता है सर. So that you tell them which all tanks have breached, what was the previous levels in the tank, what is the present level, how much water is coming in, how much water you can pump out, what is the capacity of your ballast tanks, how much is the list, how frequently you are listing, whether the list is increasing, whether it is, उसका पूरा एक फॉर्म है सर ERS का. Okay. Once you give all this information to ERS will also calculate your damage stability ashore. And then they will also determine that, Captain, this thing is not possible. We suggest that you evacuate the vessel. वो भी करते हैं. So in case of flooding, you have to inform your ERS. It will be authorized by a class. It can be DNV, it can be GL, or it can be any other organization which has been nominated by your class. इसको हमेशा याद रखना, ERS is always either your class or nominated organization by your class. In my case, it was DNV only. DNV was my class and DNV was my ERS. ERS stands for Emergency Response Service. ठीक है जी. और बताओ सर, what else you will do in case of flooding, sir? Check for pollution around the vessel. Check for pollution around the vessel. Excellent. और सर अगर फ्लडिंग हुई है तो हो सकता है इन केस ऑफ टैंकर्स या कोई नॉर्मल शिप में भी, कोई बिल्ज में हो, कोई टैंक में हो, इंस्पेक्शन कर रहा हो, तो रेस्क्यू ऑपरेशन. हाँ, if he was unable to come out, of course यार, why not? Suppose करो उन 4 पीक टैंक की इंस्पेक्शन कर रही थी, 4 पीक में ब्रीच हो गया, तब तो बिल्कुल रेस्क्यू करना ही पड़ेगा यार. Of course यार, he will start. In fact, it has happened यार, it has happened with me, but not breach. मतलब people were actually 4 पीक टैंक में सर एक हाइड्रोलिक वाल्व होता है और एक मैनुअल वाल्व होता है, करेक्ट सर? One very funny incident happened. We were overhauling this manual valve क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट था, बहुत टाइट. तो वी डिसाइडेड कि यार इसको ना थोड़ा लिंकेजेस को देखते हैं, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, इसका गेट स्टक है, लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, कोरोजन है, तो थोड़ा इसको ना इसकी मेंटेनेंस करते हैं. तो सबको बोला, फंडे दिए कि भैया कुछ करना मत, टैग्स लगाए, इंजन में बताया, इंडिविजुअली पंप्स पे जाके सब जगह उस पर टैग्स लगाए, सब कुछ किया. And people were operating. One gentleman was standing on top, जैसे नॉर्मल एनक्लोज स्पेस में होता है. 2 people were working down. चीफ ऑफिसर भी वहीं आगे पीछे घूम रहा था to supervise the operation, and I was in my office. Can you believe it, sir? Still somebody operated the 4 peak valve. और वो बंदे नीचे काम कर रहे हैं, नीचे ही पानी आ गया सर, बहुत जोर से पानी आया सर, बूम करके एकदम. इतनी बड़ी लंबी लाइन है, बालस की लाइन 16 इंच की लाइन है. सोचो 16 इंच की लाइन का पूरा पानी, बंदे वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे पानी आ गया. अरे जो उनकी टाइम फिस हुई सर, you won't believe. And luckily or unluckily, myself and Chief Officer, we were near the 4 peak only, and we were like just around it. अरे जो आवाज है ना, बूम करके आवाज है, because as soon as the उसका valve खुला 4 peak का हाइड्रोलिक valve, तो पूरा जो लाइन का प्रेशर था, मैं का पता नहीं क्या हो गया. We ran forward to the 4 peak store and we saw a lot of water coming in. Luckily, these gentlemen could come up to the first level. 4 peak tank हमेशा levels में होता है, तो टैंक टॉप से ऊपर एक लेवल में आ गए, बट उनकी जो टाइम फेस हुई थी ना, मतलब आई एम श्योर दे मस्ट हैव हैड देयर हार्ट इन देयर माउथ हियर. बिल्कुल हार्ट फेल होना था उनका, जैसे इतनी फोर्स से पानी आया ना. इमीडिएटली आई टोल्ड देम कि आओ भैया ऊपर, लेटर वी विल इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड, हु स्टार्टेड दिस पंप एंड ऑल दैट, हु ओपनड द वेल. बट ऐसा हो चुका है मेरे साथ. दिस वाज एक्चुअली वेरी वेरी फनी इंसिडेंट. ये बताओ जिसने ओपन किया उसका क्या हुआ फिर? वो तो कभी बताएगा नहीं ना यार, वो पता ही नहीं चलता. ओ. कोई मानेगा?
खुद सोचना, कौन मानेगा कि मैंने किया? पता नहीं जी क्या हो गया जी, हमने तो किया ही नहीं। जब तुमने किया नहीं तो ऐसे कैसे चल गया? और 4 पिक टैंक को बाई ग्रेविटी या बैलेंस नहीं कर सकते। 4 पिक टैंक ऊपर होता है, तो पंप चला है। अब बताओ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि पंप चला है। बट वही है ना, नोबडी सेज, नोबडी सेज किसने किया। मिली जुली साजिश होगी सर। हाँ, कुछ ना कुछ किया किसी ने, बट वही है ना, नोबडी कम्स आउट, nobody comes out that okay accident. You tell na, okay I did not see this or I missed it, it happened with me by mistake, but nobody will agree to it. तो होता ही है यार, ये बहुत होता है। बट हाँ, if somebody is working you need to evacuate him sir. सर एक चीज अभी तक हमने करी नहीं है सर, which is another important thing. What has डिस्ट्रेस been done? मैसेज। डिस्ट्रेस मैसेज तो हमने कोलिजन के केस में भेज दिया था सर। डिस्ट्रेस कोलिजन या ग्राउंडिंग में जा चुका है। फ्लडिंग देखो ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो जाएगी। फ्लडिंग इज अ कॉज ऑफ अनदर डिस्ट्रेस। प्रिपेयर एलएस। अच्छा यस सर। यार अगर सपोज करो ERS ने भी बोला कैप्टन इमीडिएटली इवैक्यूएट, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, योर पंप्स आर नॉट फास्ट इनफ टू पंप दिस वाटर आउट और टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, तो प्लीज प्रिपेयर। यार उस टाइम पे मैं अगर किसी को बोलूंगा ना, नाउ यू प्रिपेयर फॉर अबैंडनशिप, तो बंदे जो काम कर भी रहे थे ना, वो लोग वो सब छोड़ के आ जाएंगे और पैनिक सेट हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट है व्हेन द इमरजेंसी जस्ट स्टार्टेड, at that time only I must inform them that okay, you prepare lifeboats, you string out the lifeboats, you open the lashings of the life rafts, if required we will lower. Prepare, it is very very important sir, to control the morale of the crew in this time. ठीक है सर, और बोलो सर। मेरे को और कुछ याद नहीं आता, आपको कुछ और याद है तो बताओ। सर अभी लास्ट लेक्चर में यही बात हो रही थी फ्लडिंग की, तो उसमें बताया था कि बैंडेजिंग ट्राई करेंगे सर। ट्राई करेंगे? वो बैंडेजिंग टाइप बताया सर, वो कुछ कोलिजन शीट वगैरह। अबे यार वो तो वो हो गया ना यार, उसको क्या बोलते हैं आपका, सीमेंट बॉक्स एंड ऑल दैट। यस सर, सरीन सर ने कहा कि अंदर से सीमेंट बॉक्स लगाओ, बाहर से टारपुलिन। बाहर से टारपुलिन लगाने जाएगा कौन, ये बताओ। तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ कुछ चीजें हमारी सीमेंटशिप में ना ऐसी ऐसी लिखी हैं जो किसी थ्योरी में ही हो सकती हैं यार। Who will go and put it on the outside? मेरे को एक रीजन, मेरे को ऐसे बताओ सर कि एक्सक्यूज मी सर। लगा भी कैसे सकते सर, इतना फास्ट रेट होगा सर फ्लो का, बंदा ही चला जाएगा साथ में। कैसे लगाओगे यार, कैसे लगा दोगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर लास्ट शिप पे मतलब हमारे चीफ सर ने एक ऐसा आइडिया दिया था, हम ऐसा कर सकते हैं सर, पैलेट लगा के और पैलेट में टारपुलिन बांध के उसे सर दोनों रोप से उसे लोअर करके फिर जहाँ पे वो बल्कहेड में जो छेद है वहां तक लाके फिर वहां पे बांध दे सर, क्योंकि उससे फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा, एक बात बता, एक बड़े होल से पानी अंदर घुस रहा है, पैलेट आपको पता है कितनी लाइट होती है? मेरे को प्रैक्टिकली बता यार। देख यार, मैं बड़ा सिंपल कहता हूँ यार, मुंह खोल के गोबर करना ना बहुत आसान काम है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन अभी करके दिखाओ मेरे को सर। ये जो भी लोग बोलते हैं, या तो किसी ने किया हो वो मेरे को बताया कि हाँ सर मैंने ऐसे किया था और हो गया, टाइम लगा और हो गया। यार करना बहुत मुश्किल है। हमारी मैं कहता हूँ ना, हमारी सीमेंट शिप की बुक्स में कुछ कुछ ऐसे, अबे आप मुझे किसी ने सीमेंट बॉक्स भी बनाया है, अगर डायरेक्ट फ्लो आ रहा हो ना, पानी भी नहीं रुकता, मुझे इतनी फोर्स से पानी आता है, मैंने सीमेंट बॉक्स बनाया है ठंड में। इट वॉज सर सो डिफिकल्ट बट लकीली इट वॉज अ वेरी स्मॉल होल, क्योंकि हमारे टैंकरों पे क्या होता है, पहले कार्गो होल्ड, पहले बैलेंस टैंक होता है, फिर कार्गो होल्ड होता है और फिर कार्गो टैंक होता है। सो दिस वाज ओनली द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द बैलेंस टैंक, नॉट फ्रॉम द शिप साइड आल्सो। बैलेंस टैंक से कार्गो होल्ड में पानी आ रहा था। अभी उसमें प्रेशर नहीं है, लेकिन वो सीमेंट जो है ना, वो रुकता ही नहीं है। वो भी बहुत मुश्किल है। छोटा सा सीमेंट बॉक्स बनाया था मैंने, वही बनाने में इतना मुश्किल हो गया था। और अभी आई न्यू कि भाई मैंने जो है बैलेंस का लेवल जितना मैं सेफली कम कर सकता था मैंने कर दिया है, तो प्रेशर भी कम है। अब यार यही सोच, दिस इज फ्रॉम सी डायरेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ ना, कहना बहुत आसान है, जो आपके चीफ साहब ने बोला गलत नहीं है, लेकिन उनको ये बोलो कि सर आपने कभी किया है, या आप मेरे को बाहर से 4 कोनों पे तुमने पैलेट को बांधा, उसको लोअर करोगे, और 4 बंदे ही नहीं मिलेंगे तेरे को पकड़ने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, जब ऐसा कुछ होता है ना भाई, सबसे पहले लोग भागते हैं, भागेंगे, आपको आदमी नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, सबसे पहले तेरा चीफ साहब ही भागेगा। बहुत सिंपल है कहना, लेकिन बहुत मुश्किल है करना। 21 साल हो गए भाई दरिया में, मैंने ये सब कुछ देख लिया। आई एम नॉट आउट एट सी फॉर 2 years, आई एम आउट एट सी फॉर 21 years। अभी दिसंबर में मेरे को 21 साल हो जाएंगे पूरे। तो इसलिए यार कहना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने वही बोला कि यार बाहर से टारपुलिन बांधना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अंदर से यस, पहले ठोको,
इवन आई विल टेल यू वन ऑफ माय फ्रेंड, जब ये 2006 या 7 में सुनामी आई थी, he was my senior, he had just gotten promotion on that ship. It was an LPG tanker in Kashima. सुनामी आई, इनका जहाज पोर्ट पर डिस्चार्जिंग कर रहा था और इनके शिप को वेव ने मारा ऑन द फेंडर्स। फेंडर की वजह से इंजन रूम, एक टैंक और एक आगे फॉक्सल में हल रप्चर हुआ। बट उस टाइम इनको लगा कि चलो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड एवरीथिंग विल बी ओके। बट वो सुनामी जो थी कंटिन्यूसली चली और कंटिन्यूसली उनका शिप जो था मारता जाता। अब हमारे जो कार्गो टैंक्स होते हैं एलपीजी पे, दे कैन फ्लोट, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वाज इन द इंजन रूम। इंजन रूम में एक बार फ्लडिंग शुरू हो गई, सो लिटरली लकीली द रिस्पॉन्स ऑफ द क्रू, कैप्टन एंड एवरीबॉडी वाज सो ग्रेट कि उन्होंने रादर देन मेकिंग अ सीमेंट, उन्होंने क्या किया, जो उनके पास मेटल की शीट्स थी, मेटल की शीट को वेल्ड कर दिया कि साला पानी तो आएगा लेकिन पानी का फ्लो कम हो जाएगा। तो वो एक जो चीज था वो शिप को बचा गया। अगर वो भी उस टाइम सोचते ना कि यार हम लोग पैलेट ठोकते हैं, हम लोग सीमेंट बॉक्स बनाएंगे, तब तक तो पूरा पानी आ जाता है शिप के अंदर। तो इट इज वेरी वेरी इजी टू से, क्योंकि इंजन उनके अंदर ही वेल्डिंग थी, वेल्डिंग रॉड केबल सब कुछ था। उन्होंने फटक से वो मेटल की शीट को वेल्ड कर दिया उसके ऊपर, क्रैक के ऊपर ही जहाँ पे रप्चर हुआ था। फॉक्सल में जाके उनको ये सब करना पड़ा क्योंकि फॉक्सल में वेल्डिंग का नहीं था। तो वहां जाके उन्होंने यही किया कि पैलेट लो, उसके ऊपर सीमेंट डाला, एंड तभी उन्होंने बताया, कहते हैं सीमेंट बॉक्स ना बनाने आसान नहीं है क्योंकि सीमेंट जमता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जमता। बट लकीली फिर उन्होंने क्या किया, इंजन रूम का लीक रुका, दे इंक्रीज ट्रिम बाय ऑलमोस्ट 5 मीटर्स, और बाव को बाहर लेके आए। फिर जाके वो जो था पूरा का पूरा सीमेंट बॉक्स जो पैलेट लगा के उन्होंने करने की कोशिश करी थी, वो कपड़े डाले, उसमें लकड़ी की बुच मारी, पैलेट मारा, पैलेट के ऊपर सीमेंट बॉक्स डाला, तब जाके वो रुका। बट इट टुक देम लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। बट इंजन रूम में जो इन्होंने मेटल की प्लेट को वेल्ड किया, कहते हैं वो बेस्ट चीज थे। वो बेसिकली प्लेट के ऊपर एक हमने प्लेट लगा दी, तो दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट थिंग। तो ये बाहर से करना यार चेतन, कहना आसान है बट यार होता नहीं है। ओरल में करने के लिए कर दो, बट प्रैक्टिकली करके देख लेना। मैं तो कहता हूँ कभी ना ही करना पड़े, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। आप क्या लाइफ बोट लोअर करके जा रहे हो क्या नीचे, या रेस्क्यू बोट लोअर करके जा रहे हो, या आप कोई परांजा लोअर करोगे उस टाइम पे कि भैया परांजा लोअर करो, हम लोगों को ना कैनवस बांधना है बाहर। तो यार कहने की बात है यार, होगा नहीं। आप लोग भी दरिया देख आए हो, आप लोग सबके 2-2 3-3 जहाज हो गए हैं। इतना तो आप में भी समझ आ गई है कि बहुत सारी चीजें जो बुक्स में लिखी है ना, वो प्रैक्टिकली आउट एट सी पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप वही होते ना प्रीसी वाले कैरेट्स, तो मैं आपको शायद वही चीजें बोलता जो आपको बोली गई हैं। बट सिंस यू पीपल हैव ऑलरेडी सेल्ड, you have already seen what happens, how it happens, and I don't want to bullshit to you. That if I will say you to do that, तू खुद बता भाई चेतन, कर सकता है कि नहीं कर सकता? What is the level of difficulty when your ship is sinking? You will send somebody there. नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है यार। मतलब प्रैक्टिस, मैं तो वही कहता हूँ, मैं जब शिप हैंडलिंग करा रहा था मैं ये कहता, मैं कहता देखो बहुत सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, बट दे आर सर्टेनली नॉट पॉसिबल। उस टाइम पे यार आदत ये जहाज को बचाना है, बट मेरे को सबसे पहले मेरे को आदमी लोगों को बचाना है। वो सब काम करते हुए कोई पानी में गिर गया, फिर मैं क्या करूंगा यार? मैंने वो ड्रिल करूंगा या मैं शिप को बचाऊंगा या बाकी लोगों को बचाऊंगा? तो ऐसी चीज मैंने ट्राई नहीं करनी। ओके आई विल ट्राई इंटरनली, मैं कोई बुच मार के या कोई पैलेट लगा के या कोई मेटल की प्लेट को वेल्ड करके या कपड़े डाल के कुछ भी ट्राई करूंगा सर अंदर से। बाहर से मैं कुछ नहीं करूंगा यार। आई एम नॉट फूल इनफ टू डू दैट। ओरल में कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Practically, it is next to impossible, and I am not doing it, sir. I will not do it. मैं किसी को बोलूं अच्छा जी मैं वो ना पुली लैडर लगाता हूं, तो लैडर पे नीचे चला जा, वहां जाके कुछ करना ना, करना ही नहीं सर। एक तो वैसे ही से डिस्ट्रेस है वो, ऊपर से और मैं प्रॉब्लम कर लूं ना जी ना। प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज I can tolerate, but I cannot tolerate any personal loss of life or any injury to one person. As clear as that. और बोलो सर, anything else you want to add to this flooding or fire, what we did today, or anything you want to ask me, sir? You have any class after this? आपकी क्लास Yes, है sir. सर? ओके, आपकी है, मेरी नहीं है। इसके बाद आज मेरी छुट्टी है, मेरी आज सारी सुबह हो चुकी है। बाकी आज सुबह बड़ा कंफ्यूजन हुआ यार। आज सुबह आई वाज सपोज टू टेक योर क्लास, इनिशियली रजत वाज सपोज टू टेक योर क्लास, then they said I have to take the class. They told me in the morning not to take the class, but they did not take Rajat to take the class back. अब बताओ। तो फिर रजत का मेरे को फोन आ रहा है यार, फिर मैं कहा सर क्या बोलूं भैया, ऐसा कुछ हो गया कुछ। अब मैं कहा मेरे को लगा, मेरे को अगर बताया चेंज ऑफ टाइम टेबल तो आपको भी बताया होगा। कहते यार मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, आई वाज टेकिंग शावर, आई हैड गॉन टू जिम।
मैंने कहा यार अब क्या करें यार, I have no answer. को कुछ आज सुबह confusion ही हो गया यार, because if they are telling me change of timetable, then they should have communicated this thing to Rajat as well, है ना? चलो यार, thank you very much. ठीक है, take care. थैंक यू सर। Feel free anything, huh? Sir, good afternoon. How are